Afternoon, everyone. I hope I'm audible and visible. Am I? Can you please let me know? Good afternoon, guys. Am I audible and visible? Can you please let me know in the chat box? Let me just see. Hola here. So, my name is Swayam. I'm a Cambridge certified trainer. I've attended training by British Council and ITP as well, guys. And I've been helping out students to achieve their target band score in 14 years now. Yes, guys. So I know everything about IELTS and I can definitely help you out in your IELTS band score. Hi Shashwat, good afternoon. I'm audible and visible? Yeah, okay. Thanks for letting me know. Hola here. Can you please let me know quickly, guys? So I teach live on Unacademy. To be able to join my sessions, you get Unacademy subscription, and to be able to get Unacademy subscription, if you use the code so that you could get 10% off on Unacademy. Code is SHAMAARORA10. My code. Use the code to get 10% off Unacademy. Okay. So in today's class, we are going to discuss about listening, reading, writing, and speaking. An introductory section, and especially for students who don't know much about IELTS, who don't know what's their module. So, and yes, the difference between academic and general training as well. And we are going to discuss different question types and different modules files. Guys, yes, let me just tell you about the courses which are currently going on Unacademy. This is the course which I started in the month of July. It's still on. I think around 3 to 4 sessions are covered, wherein, I'm focusing on, how to develop listening skills. Because, when you develop your listening skills, you would definitely be able to get a high score in it, 8, 8.5, or maybe 9, since many of my students have scored 9 with the techniques which I tell them, right? So join the course, and in order to be able to join the course, get Unacademy subscription using my code Shama Arora 10. And this is another course on reading. This I started on July 15th. That is also going on, and recordings are available for the sessions which I've already taken. Okay. This is IELTS Intermediate Batch course, wherein we 4 trainers are involved to teach different skills: writing, speaking, listening, and reading. I'm specifically taking care of the reading part. So if you have any problem in the module, don't know how to attempt reading, the best course for you, because in this course I'm discussing how to develop your reading, able to get a high score. Okay. Uh, Shanvi says my voice is not clear. Is it, guys? Still, in the previous session there was problem in voice, and even in this session also. Shashwat, is it the same? Is it the same? Others, let me know quickly, please. Is my voice not clear? Now it's fine, Janvi. Okay, okay, okay. Thanks for letting me know, dear. Thanks. Hola here, guys. Can you please quickly let me know? Yes, guys. Let's talk about each module. Let's talk about different questions. Okay, Shashwat, thank you. And by the end of this, I'll be letting you know how to prepare for it. Okay, some important tips I'm going to discuss for each module. Fine. So IELTS reading. IELTS is basically, IELTS is divided in two parts, guys. कौन-कौन से two parts होते हैं? Academic IELTS and general training. Yeah? Academic is meant for students who want to go on study visa, whereas general training is meant for those
students who apply for permanent residency or work visa. So there is difference between IELTS and there is different criteria, okay? Different criteria as in different, I would say the question types somewhat are different. And yes, band score is also, band descriptor is also different, especially when it comes on IELTS, academic and general training. Okay? So study visa के लिए, if you want to apply for study visa, you need to for academic IELTS. But if you want to apply for PR or work visa, you need to go for general training. Okay. Now let's talk about the difference between both of them. And yes, let's talk about IELTS reading. So the very first module we are going to talk about is reading. So reading में क्या होता है guys? Reading, IELTS की reading, academic and GT, how they are different and different type of questions कैसे होते हैं. See, जो academic reading होती है ना, let me just show it to you. We have total 60 minutes for both academic and general. That's fine, that's the same for both. Okay, 60 minutes का time होता है हमारे पास for the readings and we have to complete 40 questions. Academic में भी 40 questions होंगे, general में भी 40 questions होंगे. And yes, we need to be careful about this. No extra time to transfer our answers. So if I talk about the listening module, we are given 10 minutes extra. Listening module में हमें 10 minutes extra मिलते हैं so that we can transfer our answers from the question paper to the answer sheet. But this extra time is not given in the module. So reading module में हमें कोई extra time नहीं मिलता. We will be given 60 minutes and within 60 minutes only we are supposed to transfer our answers from the paper to the answer sheet. Okay, I hope you all are getting. So we have to write answers simultaneously, no extra time. No extra time would be, guys. So we have to transfer our answers simultaneously. That is why what I would recommend here is कि जब भी आप IELTS का रीडिंग अटेम्प्ट करते हैं ना, तो स्ट्रेट अवे आंसर ही लिखा करो. डोंट राइट आंसर्स क्वेश्चन, but that would be a good practice for you all to write answers in the answer sheet itself without writing them in the question. Okay. Now, academic reading may we have three passages. 1, 2, and 3. We have three passages. They all are lengthy passages, right? And academic reading में जो level होता है ना guys, जो academic reading का level है, वो GT reading से ऊपर होता है level, right? इसमें ज़्यादा complex language use होती है and जो passages होते हैं ना, mostly they are based on academic studies, right? Since it's an academic IELTS, and academic IELTS हम क्यों prepare करते हैं? Because we have to go in study visa and we have to pursue our studies in other countries. ना? तो ये जो passages होते हैं, they are academic based, okay? And मैंने बताया क्या अभी कि these are more complex passages as compared to the G. Okay? So हर passage में they would be around 13. There would be around 13 questions. Overall 40 questions in three passages. Overall 40 questions in three passages. Now the question is कि कौन सा पैसेज पहले करना चाहिए. Let me tell you guys, एक तो अगर आप केम्ब्रिज की बुक्स पढ़ते हो तो आपको ये पता चलेगी कि जो फर्स्ट पैसेज है दैट्स द इजीएस्ट वन. सेकेंड उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थर्ड उससे भी डिफिकल्ट. So as per Cambridge, they make the first passage the easiest one for academic reading and the last passage the toughest. But still, what I would say, it all depends on our interest area, right? What I believe is ये हमारे interest area पे ज़्यादा depend करता है हमें कौन सा passage easy लगेगा, कौन सा passage tough लगेगा. What I would suggest you guys is, in कई बार क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम फर्स्ट पैसेज हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कई बार. तो अगर फर्स्ट पैसेज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है गाइस, तो उसका रीजन क्या है? द रीजन इज कि आपका उस पैसेज में जो टॉपिक है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा. मे बी आपने ऐसा टॉपिक पहले कभी स्टडी नहीं किया, कभी रीड नहीं किया. दैट इज वाई आई सजेस्ट समटाइम्स टू स्टूडेंट्स कि अगर आपको टाइटल पढ़ा करो, सबसे पहले तीनों पैसेजेस की टाइटल को रीड करो. एकेडमिक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गेटिंग, है ना? सबसे पहले टाइटल्स को रीड करो ऑफ ईच पैसेज. जो टाइटल आपको
थोड़ा सा कैची लग रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, रीड इवन द थर्ड पैसेज. ओके, स्टार्ट डूइंग दैट पैसेज फर्स्ट टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन रीडिंग, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आइल्स की रीडिंग में तब आती है व्हेन यू आर अनेबल टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन. Fine. So not necessarily you have to start from the first passage. Read the headings of all the three passages. जो आपको सबसे interesting लग रहा है, start with that one. Okay. I hope you all are getting. Can you please quickly let me know, guys? Tanvi, Nikita. Good afternoon, Nikita. Yes. So these are different question types, guys. अब academic और GT की reading में difference क्या होता है? Let me talk about that. Academic reading में we get 3 passages. GT reading में we get 5 passages. Get 5 passages. There are 3 sections. Yeah. जो फर्स्ट सेक्शन होता है में हमारे पास वो पैसेजेस होते हैं, छोटे छोटे से पैसेजेस होते हैं, वेरी स्मॉल. है उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है ना, दैट आल्सो कंटेन्स 2 पैसेजेस. दैट आल्सो कंटेन्स 2 पैसेजेस. और जो थर्ड वाला सेक्शन होता है ना, उसमें एक ही पैसेज होता है, लेकिन वो सबसे लेंथी पैसेजेस होता है. जितने भी पैसेजेस होते हैं आईएलटीएस की जीटी रीडिंग में ना, जो लास्ट वाला पैसेज होता है, दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन, एंड दैट्स द पैसेज विच इज द लेंथीएस्ट वन. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्वेश्चन टाइप्स में भी डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है. no. एकेडमिक एंड दोनों जीटी एंड एकेडमिक दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस will be there, short answer questions there, yes no not given will be there, true false not given, sentence completion के, मैचिंग लिस्ट क्वेश्चंस के, मैचिंग पैराग्राफ्स क्वेश्चन के, लिस्ट ऑफ हेडिंग सब में सेम रहेगा. एकेडमिक एंड जीटी दोनों में सेम रहता है. तो ओनली डिफरेंस इज फाउंड हियर गाइस. वो कैसे? जो डायग्राम्स होते हैं ना, दे आर इन एकेडमिक रीडिंग के डायग्राम्स होते हैं, whereas जो फ्लो चार्ट्स होते हैं दैट आर मोस्ट फाउंड इन जीटी रीडिंग. दैट्स द ओनली डिफरेंस. आई होप यू ऑल आर गेटिंग राइट. तो डायग्राम्स होते हैं, दे वुड बी इन एकेडमिक रीडिंग, whereas जो फ्लो चार्ट्स कंप्लीट करने होते हैं दे वुड इन जी. Yeah. Now, type of questions are almost same. The only difference I've told you here, है ना? That's the difference in academic and GT. Now the question is कि क्या strategies different होंगी IELTS की GT reading and academic reading को attempt करने के लिए? No, strategies are also going to be the same, because अगर आपको IELTS का reading improve करना है ना guys, तो आपको हर question related strategy पता होनी, how to attempt it. हर क्वेश्चन की डिफरेंट स्ट्रैटेजी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, शॉर्ट आंसर हैज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, yes no not given has a different strategy. So each and every type of IELTS has a different strategy. So if you want to get a good score in IELTS reading guys, so start working on different strategies. And yes, the most important thing, start reading newspaper. ठीक है, अपनी हैबिट बनाओ. अगर तो आपका लेवल बहुत मतलब नॉट लो, आई वुड नॉट से बेसिक लेवल है, तो स्टार्ट विद द टाइम्स ऑफ, स्टार्ट रीडिंग दिस न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया. और अगर आपका लेवल मीडियम लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, एंड इवन बेटर देन दैट, तो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड द हिंदू. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस क्यों बताया आपको, क्योंकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें इजी लैंग्वेज है मोस्टली, लेकिन जो द हिंदू है उसमें काफी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज होते हैं. द हिंदू फॉर दोस्त जिनको थोड़ा सा ज्यादा पता है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, राइट. द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर बेसिक लेवल्स. So I hope you all are getting, guys. Janvi the Tribune also fine for basic level students. Fine, Janvi. Others, guys, any doubt here to any one of you? I hope you all have got to know the difference in academic and GT and the different type of questions. Strategies are going to be the same, guys. Strategies are going to be the same. Let me tell you now how to manage time for reading. कितना टाइम किस पैसेज पे स्पेंड करना चाहिए. तो जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं गाइस, उनको हमेशा ये वाला टाइम लेके चलो. 15 minutes for the first passage, 20 minutes for the second passage, 25 minutes for the third passage. जो भी पैसेज आप सबसे पहले अटेम्प्ट करना शुरू
spend only 15. आप लोग गलती कहाँ करते हो? You spend around 25 to 30 minutes on the first passage. यहाँ पे गलती हो जाती है कि जब हमने रीडिंग करना स्टार्ट किया, we are highly motivated, है ना? धीरे धीरे वो मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा डाउन आता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज रीडिंग इज समथिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट बोरिंग लगती है, बिकॉज यू हैव टू सिट इन वन गो एंड यू हैव टू आंसर क्वेश्चन। तो उसके लिए माय सजेशन वुड बी टू मेंटेन योर इंटरेस्ट इन रीडिंग, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड इन रीडिंग, you need to have some extra time spent for the last passage. Okay, so first passage must be completed minutes, सेकेंड में अराउंड 20 मिनट्स, लास्ट पैसेज के लिए सबसे ज्यादा टाइम आपके पास होना चाहिए, अराउंड 25 मिनट्स। ठीक है, जीटी स्टूडेंट्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू दिस। गाइस एक बार ये क्लिक ले लेना इसका प्लीज। दैट्स ग्रेट, ज़ैड सेज मेरे 30 मिनट्स में, बट ज़ैड द क्वेश्चन इज कि मार्क्स कितने आते हैं? आर यू एबल टू स्कोर 8+ इन इट? मार्क्स कितने आते हैं ज़ैड? तो जीटी स्टूडेंट्स के लिए माय सजेशन इज spend around 7 minutes on the first passage, around 7 on the second, 8 and 8 minutes, 16 minutes on the second section, and last passage you have around 30 time, because last passage is going to be the toughest one. This is the way you are supposed to manage your time. 34, between 34 and 36. Yes, yeah, that's really good. But you know, you should aim for 9 band then, isn't it? Aim for band 9. जो गलतियां हो रही है ना उसको चेक करो, why are you making mistakes? Because if in 30 minutes you are able to get 34 to 37 answers correct, then definitely अगर आप पूरा का पूरा टाइम लगाते हो तो able to get 40 on 40, है ना? तो why not to aim for 40 on 40 Zad, है ना? You can do it, तो aim for 40। क्योंकि देखो जैद, अगर हमारे पास टोटल 60 मिनट्स का टाइम है, एंड इफ यू डू योर रीडिंग इन 30 मिनट्स, तो बाकी की जो 30 मिनट्स है उसका हमें कोई होने नहीं वाला है ना। एम आई राइट जैद? कि आपकी 30 मिनट्स का टाइम बचा, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट बिकॉज ऑफ दैट कि हमने 30 मिनट्स में कंप्लीट। तो बेटर अगर आप वो रिमेनिंग 30 मिनट्स का टाइम लगाकर भी जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको चेक करोगे क्यों हो रहे हैं, सो दैट आप 9 on 9 वीडियो ले पाओ। Yes. Okay. Let's now talk about listening module. We all know listening is going to be the same for both academic and general training guys. अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स पता है क्या बोलते हैं? दिस इज जस्ट अ र्यूमर। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर जनरल ट्रेनिंग का जिस दिन एग्जाम होता है, अगर हम उस दिन एग्जाम देते हैं तो लिस्टिंग हमें इजी। नथिंग एज सच गाइस, इट्स जस्ट अ र्यूमर। ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल वालों की आती है। Nothing as such, not at all, not at all, okay? Nothing as such कि जनरल वालों का लिसनिंग होगा। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है, वो डेट्स उसी हिसाब से चूज करते हैं कि लेट्स द डेट व्हेन देयर वुड बी जनरल टेस्ट होल। एकेडमिक स्टूडेंट्स वेट करते हैं क्योंकि यू नो, अगर मैं एक मंथ की बात करूँ, एक मंथ में 4 एकेडमिक के टेस्ट होते हैं, यूजुअली हर वीक में टेस्ट होता है, एंड मोस्टली 1 टेस्ट थर्सडे को होता है, बाकी के 3 सैटरडेज को होता है। ये पेपर पेन बेस्ड बात कर रही हूँ, एंड दिस इज फॉर एकेडमिक। आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर पेन बेस्ड टेस्ट। फाइन, 1 टेस्ट थर्सडे को होता है मंथ में, बाकी के 3 सैटरडेज को होते हैं, एंड जीटी वाले टेस्ट मोस्टली 2 होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं मोस्टली इन 1 मंथ। क्या अब जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं वो वेट करते हैं कि जिस दिन जीटी का टेस्ट होगा उसी दिन हम भी टेस्ट देंगे, क्योंकि एकेडमिक इकट्ठा होता है। फाइन, दे वेट फॉर इट कि लिसनिंग इजी आएगा, बट नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस कि आएगा उस दिन आएगा, नथिंग एज सच। ओके ओके, जानवी सेज which one should paper or Janvi, it's all about how comfortable you are with paper pen based or computer based, how comfortable you are, क्योंकि if I talk about myself, I'm not much comfortable sitting in front of the screen for a long time. I'm not much comfortable. I always prefer paper pen based examination, just because you know, when I have to keep staring at the screen for a long time, I feel headache and मुझे eyes में भी pain शुरू हो जाता है। If it happens, I'm unable to concentrate and would definitely band score को impact करे, right Janvi? It's all about you know
योर वे, आपको क्या पसंद है ज़्यादा, क्योंकि these days many students are going for computer based tests also. Why? Because they are more comfortable with computer, have to work on computer mostly, है ना, तो they are more comfortable. तो अगर आप कंफर्टेबल हो, यू कैन गो अहेड विद दैट, ठीक है, ऐसा कोई और डिफरेंस नहीं है, तो आप उसमें जा सकते हो, बट आई पर्सनली प्रेफर पेपर पेन बेस्ड, ठीक है जानवी. एंड आई हैव अ कंप्लीट सेपरेट सेशन ऑन दिस ऑल्सो, डिफरेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एंड पेपर राइटिंग एंड क्या डिफरेंस है, आई हैव अ सेपरेट सेशन. Okay, so listening is going to be the same for academic and general training, and listening is the module which is the easiest one, the easiest module I would say, and the most easiest भी इसीलिए क्योंकि this is the most, है ना, आउट ऑफ ऑल द फोर मॉड्यूल्स ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग. नाउ ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों? because here we have to listen to different voice, है ना, different voices होती है, we have to listen to them, there are different accents and there is a different way how to answer the questions, have to pay attention and हमें सुन के आंसर देना होता है. एंड दिस इज समथिंग, अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स लगाते हो तो बहुत इजीली स्कोर आ जाता है ना. लिसनिंग टेस्ट इज द सेम फॉर IELTS academic and IELTS training. You will listen to 4 different recordings and then answer 10 written questions for each part. तो listening में guys होता क्या है, we have 4 parts. Yeah, part 1, part 2, part 3 and part 4. Part 1 is between two speakers having an everyday conversation. It will be between two speakers, it's a conversation. Part 1 होता है, that's a conversation between two people and that's the easiest part, क्योंकि listening में क्या होता है, difficulty level keeps increasing with the sections. First section would be the easiest one, last section would be the toughest one, and it's a conversation. Part 1 पहले क्या होता था listening में, I think around 2 years back there used to be an example in part 1, वो इसको और इजी बना देता था, बट इट्स बिन अराउंड 2 years एग्जाम्पल को किया गया है. तो अभी जब आप स्ट्रेट अवे सुनोगे, अभी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा. जब आप लिसनिंग सुनते हो, लेटेस्ट लिसनिंग won't be you won't be finding any examples. पहले एग्जाम्पल होता था, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट पहले क्या होता था अब नहीं होता, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि अभी क्या है, राइट. तो part 2 इज अ मोनोलॉग. मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, वेयर देयर इज वन conversation is between two or more than two, whereas monologue is wherein one person tells about something, maybe like a lecture, news headlines, lecture. So monologue, part 2 and part 4 are going to be monologues. Part 1 and part 3 are going to be conversation. Okay? Part 1 conversation है, part 3 भी conversation होता है. तो part 2 है and part 4 है, that's a monologue. एंड देर आर डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स फॉर देम गाइस. जो part 1 है ना, उसमें आपको 2 ऑडियो क्लिप्स मिलती हैं, सुन, 2 ऑडियो क्लिप्स. वन इज यूजली फ्रॉम 1 to 4 or 5 and then another one is from 6 to 10. So between this, you are given half a minute का आपको टाइम मिलता है, so that you could read your further question, take your that time. 10th के बाद भी आपको half a minute का ब्रेक मिलेगा, फिर 11 to 15 and then 15. थर्ड सेक्शन में भी 21, 5 और 20, राइट. इट वेरीज समटाइम्स, किसी होते हैं, किसी 4 होते हैं, 5 होते हैं, राइट. एंड देन 26 to 30. लेकिन जो लास्ट सेक्शन है ना, देयर इज वन ऑडियो आउट. लास्ट सेक्शन में हमें हाफ मिनट का टाइम नहीं मिलता. दैट इज द रीजन दिस इज द मोस्ट टफेस्ट. सबसे ज्यादा टफ लास्ट वाला इसीलिए होता है बिकॉज लास्ट में एक ही ऑडियो क्लिप होता है थ्रू आउट, वन ऑडियो क्लिप. तो लास्ट वाले सेक्शन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हम अपने आप को फेमिलियर कि फर्स्ट 3 सेक्शंस में आपको हाफ a minute का ब्रेक मिलेगा. आप क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो बिटवीन, आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो. बट लास्ट सेक्शन में इट्स द मोस्ट फ्लुएंट सेक्शन एंड वी आर गोइंग टू हियर वन ऑडियो क्लिप फॉर 31 to 40. Okay, I hope you all are getting. That is the reason the most toughest. Let me just comments now. Harpreet says I feel more comfortable with computer, more confident in speaking. That's good, Harpreet. So you can go ahead with computer based test then. है ना? That said, मैम listening में 35 के अराउंड मार्क्स आते हैं. That listening skills को improve करने के लिए ना, जो आपका lacking area है ना, जिस एरिया में भी आप लैक कर, start working on that area.
जैसे आपने बोला कि रीडिंग में यू फेस प्रॉब्लम इन ट्रू फॉल्स, राइट दैट, स्टार्ट वर्किंग ऑन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मोर, है ना। स्टार्ट लिसनिंग टू वीडियोस जिसमें आपको पता चले फॉल्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है, राइट। एंड अगर आपको लिस्टिंग में प्रॉब्लम आता है तो लिस्टिंग में चेक करो कि आपका क्या है, क्या आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, इन पार्ट 3 और इन पार्ट 4, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इम्प्रूवमेंट, तो you'll okay? And yes guys, it's an app which is help you a lot, STITCR. Okay, that's an app going to help you improve your listening. Fine. Okay, Shashwat says I lack in matching. Shashwat, I think I had a session 2 days back only on classification questions. To that, that's there in the plus. Okay, the listening course which I started, the last session which I had, that was on classification. Shashwat, that will help. Fine. लिसनिंग में पार्ट 3 दैट लिसनिंग में पार्ट 3 में प्रॉब्लम आता है तो पार्ट 3 पे ज्यादा वर्क करो, ओके फाइन। जानवी सेज एमसीक्यू आर डिफिकल्ट फॉर मी, वन भी करेक्ट नहीं होता है जानवी। anyways you are a plus student, so we will be discussing in the class how to attempt multiple choice questions in IELTS list. Okay, there is a strategy to follow and if you follow that, definitely be able to get a good score. Okay, that my name is Swayam Prabha. My name, most of my students know by my nickname, that's Shama. Okay, okay. So listening is the same for both academic and guys. I hope it's all clear. One rest. Now let's talk about speaking. So IELTS speaking is I find it fun. Listening है वो मैंने बोला students के लिए बहुत interesting होती है, बहुत सारे students. But if I talk about my personal favorite of all the modules of IELTS, that would be speaking undoubtedly. स्पीकिंग इज समथिंग जो एक तो गाइस इसके लिए पहले तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हाउ टू आंसर दो पार्ट्स एंड स्ट्रैटेजी आपको क्या यूज करनी है, हाउ टू इम्प्रूव। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1, द इंटरव्यूअर himself or herself checks your ID and then will ask questions of work or studies and some general। जो पार्ट 1 होता है ना आइल्स की स्पीकिंग, that is the easiest one because यहाँ पर personal questions are going to be asked, आपसे related question। but problem क्या आती है, जैसे आज मैंने आप लोगों का समझा था राइट जानवी, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को नहीं सुनते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, स्टार्ट आंसर। और जस्ट अबाउट स्पीकिंग गाइस, इट्स अबाउट स्पीकिंग टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड, जो पूछा गया उसी का आंसर तो देना। ऐसे ही कुछ भी आंसर कर देंगे तो हाउ विल टू गेट अ हाई स्कोर इन स्पीकिंग लिस्ट गाइस। मतलब ध्यान से, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है आइल्स में, हर जगह प्रेजेंस ऑफ माइंड हर जगह पर बहुत जरूरी। listen carefully, then only you would be able to answer to the questions well। and part 1 में we should answer for in 2 to 3 sentences for each of the questions, and around 8 to 10 questions are going to be asked in part 1। okay, so very first question होता है that is what's your name, then how may I call you। अब इसके बाद they ask you about your work or studies, so whatever you do accordingly 3 to 4 are asked। अगर आप बताते हो कि you are currently in work तो आपसे 3 4 questions they would ask later for work। if you tell you are currently in studies, then 3 to 4 questions further would be related to your studies, and then after be asking you 1 or 2 different topics and 3 to 4 questions of them। 1 or 2 different topics कैसे, just suppose there is one topic on festival, now they will ask you 3 to 4 questions on festival and the questions would be related to you only। कैसे, जैसे which is your favorite festival, why do you like celebrating this, you like celebrating of other festivals of other cultures also। this way 3 to 4 questions on one topic। अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे एक टॉपिक सुनते हैं या 2 टॉपिक सुनते हैं, दैट इज अप टू देम ऑफ। okay, so I hope it's all clear about part 1 guys। part 2 में we will be given a topic card and we have 1 minute for the topic card to prepare on it, and then after for 1 to 2 minutes we will have to speak
ऑन टू द टॉपिक। 1 से 2 मिनट्स हमें बोलना होता है। अब this is 1 to 2 minutes, guys. It's written on different websites also. 1 to 2 minutes आपको बोलना है, but my suggestion to you would be to speak for around 2 minutes, okay? Because this will definitely leave a good impression. क्योंकि पार्ट 2 का मोटिव होता क्या है, ये चेक करना कि हाउ वेल वी आर एबल टू स्पीक एट लेंथ, लेंथ पे हम कितना बोल पाते हैं। तो हमारा पार्ट 2 अगर हम 2 मिनट्स कवर करते, दैट विल डेफिनेटली बी द बेस्ट थिंग हियर। बट यस, यहाँ पर भी मेनली आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से डिविएट हो गए तो डेफिनेटली आपका बैंक्स को डिडक्ट होगा। आइल्स में हर जगह पर ये मैटर करती है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है यू हैव टू आंसर अप टू दैट ओनली। क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर देना है, डोंट डिविएट फ्रॉम द क्वेश्चन। 8 हो गए तो डेफिनेटली बैंक स्कोर कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पार्ट 3। जो पार्ट 3 होता है ना, दैट्स नॉट अबाउट अस नाउ। Part 1 is about us, part 2 is about us, but part 3 is not about us. It's about the world at large. Part 3 would be having abstract questions. Abstract questions. So, part 1 को ज़्यादा अच्छे से explain मैं कैसे, by saying कि sorry, part 3 को, part 3 is more like essay writing in IELTS. तो जैसे IELTS में essay writing होता है ना guys, वैसे ही part 3 है। ऐसे राइटिंग में यू आर आस्क्ड अग्री डिसएग्री, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। वही उसी तरह के क्वेश्चन आइल्स की स्पीकिंग में पार्ट 3। तो पार्ट 3 में नेवर गिव योर पर्सनल एग्जांपल्स। पार्ट 3 इज नेवर अबाउट अस, इट्स जस्ट अबाउट हमारे व्यू पॉइंट्स ऑन द वर्ल्ड। वर्ल्ड को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर हमारा व्यू पॉइंट क्या है वो हमें देना होता है पार्ट 3 में। तो कभी भी पार्ट 3 में अपने आप को मत करो, नेवर एवर, नेवर गिव पर्सनल। फाइन। तो पार्ट 3 इज अ डिस्कशन गाइस, डिस्कशन। इसमें जो एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछेंगे यू विल हैव टू आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली टू देम। ठीक है, एंड पार्ट 3 में व्हाई एंड हाउ वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सपोज आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया, they would still ask you why, would still ask you how, and they would keep asking why and how because they want you, they want you to be engaged in discussion. I've already said more like a discussion, है ना। अगर वो आपसे वाई या हाउ वाले क्वेश्चंस पूछते हैं ना, डोंट हेजिटेट, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, स्टे कॉन्फिडेंट थ्रू आउट, बिकॉज पार्ट 3 का मतलब ही यही है, डिस्कशन क्वेश्चन। पार्ट 3 में इट्स लाइक अ डिस्कशन बिटवीन द एग्जामिनर एंड स्टूडेंट। दे कांट आंसर टू द क्वेश्चंस सिंस दे आर द इंटरव्यूअर देयर। तो वो क्या करते हैं, सिंपली आपसे आपका व्यू पॉइंट जानने के लिए दे वुड कीप आस्किंग यू व्हाई एंड हाउ इन बिटवीन। I hope it's clear to each one, guys. It's all about speaking. I hope it's clear. Let me just read the questions now, which you guys are asking. That says my voice is breaking in between. Guys, is it so? Is it for everyone? Application name. Application name मैंने बताया, Zad, it's STITCHER. STITCHER. Podcast, okay? That says, मैम अगर कीवर्ड का टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है, देन आई टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, get distracted. So Zad, try to be realistic for all the topics, and you have that, you know, speaking जो guess work होता है, आई होप सबके पास है, स्पीकिंग का guess work सबके पास है, आई होप उस guess work में से ना जितने भी टॉपिक है एक बार सबको कर लो। Try to think about a story on each one of them so that when you go in the final examination, ऐसा कुछ भी ना हो कि एकदम से इमीडिएट आया आपके पास एंड यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि बोले क्या, है ना। जो गेस वर्क है उसमें एक बार गो थ्रू कर लो, दैट विल हेल्प दैट। ओके, फाइन। आई डू अंडरस्टैंड मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि हमारा इंटरेस्ट बहुत कुछ बोल पाते हैं, लेकिन जिस टाइम्स इट हैपेंस कि क्या बोले समझ नहीं आता। बट येस, इफ यू डू प्रैक्टिस फॉर डिफरेंट क्वेश्चन देन definitely you'll be able to get out of them, right Zan? Contrasting ideas, what Shashwat, what are you about? Okay, let's talk about the last module, last but not the least, writing module. So
That's good, Zad. That's good. So writing में क्या होता है, guys? Writing is divided in two parts: task 1 and task 2. Task 1 is different for academic and general reading. Academic में it's a report writing, whereas for these students it's a letter writing. Okay? Task 2 is going to be the same for both academic and GT essay writing. Task 2 में essay writing होता है and it's for academic and yeah, 60 minutes होते हैं for दोनों task. It's up to us how we want to manage time for both tasks. But yes, since task 2 is of 6 bands and task 1 is of 3 bands, we should spend maximum 20 minutes time on task 1, be it academic task 1 or general teaching. Maximum 20 minutes should be spent on task 1. Task 2 is of 6 bands. That's the reason we spend around 40 minutes. Okay? ये टाइम डिवीजन हम लोग खुद करते हैं, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता. We'll be giving you 60 minutes for both the tasks. दोनों टास्क के लिए आपको 60 आएंगे. It's up to you how you want to manage the time. But since task 2 is of 6 bands and task 1 is 3 bands, better if you spend around 40 minutes on task 2 and around 20 on task 1. Okay, fine guys. So task 1 में let's talk about GT first. GT में क्या होता है? We get different types of letters. We have formal letters, semi-formal letters, and informal letters. We will be getting one question there in the final examination. कोई भी letter आ सकता है, formal, semi-formal या informal. And you will have 60 minutes for both the writing. But since task 1 is of 3 bands only, I have suggested spend around this. So task 1 में हमें minimum at least 150 words लिख, at least 150, and maximum it should be up to 170. Okay, in 20 minutes 150 to 170 words, and better if you divide it in paragraphs. So letter writing should be divided in 3 paragraphs. Okay, let's talk about academic task 1. Academic task 1 we get different types of graphs: bar graph, line graph, table, pie chart, map, diagram or process combination graphs. We get different types of graphs and we have to write on it at least 150 words, 20 minutes ka time, and its task 1 is worth 1/3 of your total marks on the writing test. Now let's talk about essay writing. This is the same for both academic and GT. Okay, same. So we have different type of agree, disagree, discussion essay, problem solution, causes, effects, advantage, disadvantage, direct question. अच्छा, वैसे मैंने बताया ऐसे राइटिंग इज द सेम फॉर बोथ जनरल रीडिंग एंड एकेडमिक, लेकिन इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना ऐसे के वो डिफरेंट होते हैं एकेडमिक एंड जीटी. वो कैसे? जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस, राइट. जो टास्क 2 होता है ना जीटी स्टूडेंट के, इट्स मोर अबाउट लाइफ स्किल. जैसे अगर मैं बात करूं एकेडमिक राइटिंग, तो अगर कंप्यूटर एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक है ना दैट वुड बी रिलेटेड टू एकेडमिक. अगर कई बार जीटी वालों के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, इट्स अबाउट वर्क, इट्स अबाउट पेरेंटिंग, it's about marriage. What should be the perfect age for marriage? Should it be 30 or more than that? Right? This sort of questions. This way question varies guys. जो essays होते हैं ना वो जीटी वालों के लिए अलग होते हैं, academic वालों के लिए अलग होती हैं, बाकी सारी चीजें. essay writing definitely दोनों academic and but type जो questions है ना they are going to be. I hope you all are getting how and why. Yes, and I've already said we have total 6 minutes for writing. They say task 1 pay spend around 20 minutes, whereas task 2 pay spend around 40 minutes. And I've already told you that. Okay? Yes, I hope it's all clear to each one of you guys. Yes. Now just quickly have a look on this slide. This one. How to prepare for the exam. Know your band requirement.
Get your level assessed from an IELTS expert, make a timetable and start working on all the modules. Don't be overconfident for any of the modules. Get your writing and speaking evaluated on regular basis. Don't put exam date in a hurry until and unless the exam date. Appear for the mock test once a week so that you could know what your level is and what you are, and start working on your improvement. And when the exam approaches, attempt it. Okay, guys, this will definitely help you prepare for the final exam. Okay, so let me just read the questions now. Doubts you have? That says, okay, that I've already. Should I try to write essays on type of topics? Definitely, that would be that. Because there are different type of essays: time related, education related, family related, guides, and try to write on each one of them. Harpreet says, Siri IELTS में की practice कहाँ? Any particular site? Yes, Harpreet. आईटी पे आपको मिल जाएगा. आईटीपी पे अगर आप सर्च करते हो ना हरप्रीत, यू विल गेट इट देयर. Okay, and join my telegram channel. I'll share the link. Join this telegram channel, IELTS by Arora. I'll share. What extent do you agree type question को attempt? That जो to what extent question है ना, उसमें भी it's better if you go with one side. One side either or complete, that would be the best. But yes, you can go partial or balanced also. के लिए read sample answers, okay, जिसमें आपको पता चले how to use the language in case you partially agree or you have a balanced opinion statement. Fine, that. Join my telegram channel. I'll share the link there of some of the essays, sample answers. Fine. Okay, is it Preet? All right, guys, that's it from my side for today. Tomorrow for 11 a.m. session on Unacademy. That's a special class on person-specific vocab. Person-specific vocabulary. I'm going vocabulary class in Unacademy पे special. And Unacademy के YouTube channel पे कल 12:30 again our class, and that is on IELTS for beginners. I'll talk about how beginners should start preparing for IELTS in tomorrow. And yes, get Unacademy subscription using code Shama Arora 10. The code to get 10% price if you attend my regular classes, and if you want to prepare for IELTS with time, join Unacademy using code Shama Arora 10. Get 10%. हाँ ज़्यादा 20% डिस्काउंट वाला अभी नहीं. चलो, all right guys, okay, bye. Next class. Thank you.